ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। उमंग उत्साह उड़ती कला। Om उमंग Shanti. उत्साह Welcome बड़ी to से बड़ी शक्ति। the Vyakti Parivar. ये अव्यक्त Today ईश्वर is day 4. निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक स्थिति बनाओ। अंत समय में अपनी Zeal and सिद्धि enthusiasm is the greatest मनसा power. शक्ति साधन बनेगी। Today's मनसा Avyakt शक्ति द्वारा signal ही स्वयं की अंतः सुहानी बनाने की inculcate the शक्ति power हो of being सकेगी। fearless and make your उस समय stage मनसा unshakable, शक्ति immovable, अर्थात and श्रेष्ठ constant. संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। At the तभी final आपकी सेवा moments, के the लिए, power of the स्वयं mind की will सिद्धि के become लिए a means for मनसा your शक्ति protection. और निर्भयता की शक्ति Only with the जगाते power हैं। of your mind will you be able to अच्छी become an प्रगति instrument to सिखाइए। make your final moments beautiful at that time. At that time, you will need a clear line with the one through the power of your mind, that is, through the power of elevated thoughts, in order to do unlimited service and for your own protection. Account the power of your mind and the power of fearlessness. Accumulate the power of your mind and the power of fearlessness. Now we will listen to Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. शक्ति क्या है और What शक्ति is जमा कैसे होती है? what is power and how to accumulate the शक्ति का powers. संबंध हमारे संकल्पों से है। Power is connected to our तो thoughts. जैसा भी समय है, जैसी परिस्थिति है, उस समय Whatever the circumstances are, शक्ति चाहिए, उस शक्ति को इमर्ज whatever करना पड़ता है। according to the situation, we need to वो emerge the संकल्प उसी powers. समय पर लाने पड़ते हैं। At that time, we need to create thoughts जैसे कभी-कभी to bring किसी out the मन में powers to the surface. कोई बात का उमंग उत्साह नहीं रहा, Sometimes when we don't have zeal and enthusiasm about something, then we don't feel like doing anything. We will be sad, we will be upset. जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, At that time, अपने भाग्य के बारे में या जो आप होमवर्क ले रहे हैं, the homework or good things about our fortune, we should bring those types of thoughts. So when we create these kinds of thoughts, then the power will again emerge. Just like we charge the battery, sometimes we need to generate the power. So similarly, in our minds, when we create elevated thoughts, the thoughts of creating fortune, elevated fortune, if we bring those thoughts again and again, it's not like that I'm already Baba's child, I'm already an heir child, but the thoughts, the words, and our actions, even when we are performing actions, at that time, we need to, if we want to use the power of tolerance, then we should use the power of tolerance so that we can accumulate that power. आयु होती है, बड़ी होती है,
When we grow old, the शक्ति body को बार becomes बार old. अपने अंदर इमर्ज करना पड़ता है, लाना So पड़ता है। then we have to emerge the powers. तो जमा की हुई शक्ति So जो आपने इतने वर्ष की जो जमा whatever की है, powers we have, उस we जमा को accumulate फिर over the यूज करना years, पड़ता है। we need to use those और यूज powers. करने के लिए फिर And ये when we, संकल्प लाने हैं। and in order to कहीं ना कहीं use सोचते हैं हमने the इतने वर्ष powers that we've पुरुषार्थ किए, accumulated, we have to create thoughts. तो अभी तो क्या जरूरत पड़ेगी ना, बहुत जमा है। Sometimes अभी some तो souls think बहुत that सारी जमा है, we have तो accumulated क्या so हो much, गया, so there is सब no कुछ need अपने आप now हो जाएगा। to तो accumulate यूज more. करना पड़ता है ना धन को भी। तो So if you have accumulated a lot of wealth, then you जमा have है to तो use ऐसे the, ऐसे चलो, you need to use the थोड़ा सा wealth. सिक्योरिटी फील You होगी, cannot बट just इनफ keep है। accumulating. लेकिन इनफ को भी तो यूज करना पड़ता है ना। Even if it is enough, तो you have इसलिए to जब use हम that wealth. बोलते हैं शक्ति जमा करनी So है, similarly, तो थोड़ा सा विचार सागर मंथन करना when चाहिए। we listen to this, that we have to accumulate powers, then क्योंकि कभी कभी आप we have to देखेंगे, churn the आप कुछ knowledge. करना चाह रहे हैं तो Sometimes you want to बैटरी do आपकी डाउन something, है, then you तो notice क्या that your करेंगे, battery is very low, उससे कनेक्ट करेंगे ना, very low. Then what do you do at that time? रिचार्ज You रखने के लिए। connect. हाँ, Then you एक connect, बार मैं right? किसी देश में थी, To recharge. तो वहाँ One पर time I was in a एक country. प्रोग्राम था होटल में, There was a program तो in एक hotel. रेसलर था, So a wrestler तो was there. आया कहता मैं आपसे मिल सकता हूँ, He मैंने came कहा to me and he said, तो he मिलिए। asked me, can I meet with मैं you? इतनी रेसलिंग करता हूँ, So he said that आज मैंने अपनी उंगली भी नहीं उठाने की हिम्मत है मेरी, इतना I मेरा do, एनर्जी डाउन है, मैं I क्या do a करूँ। lot of wrestling, but I don't have any तो मैंने energy. बताया So then कि आत्मिक स्थिति I कैसे told होती है, him about the परमात्मा से soul, कनेक्शन, how to make the फिर connection with संकल्प को God. फिर जनरेट करो, आपकी जो Then हिम्मत है। I told, कहता I मैं told उंगली him भी नहीं उठा पाता था, हाथ that में I am चोट not पड़ able गई to, थी, my body is so गुलामी big, वाली but I am जिंदगी not में able to रहना पड़ता था। even lift my तो finger. एनर्जी जिस So I व्यक्ति told को him कहते हैं ना कि to आपके connect बिल्कुल to एनर्जी God. नहीं है, इसका मतलब कि मन में उमंग उत्साह नहीं है। So दूसरी बात, आप if जैसे battery is नियम low, that पालन means there करते is हो, no zeal and enthusiasm जैसे आप in the मुरली mind. सुनते हैं, नियमित है, So तो कई बार कई ऐसे anything मुरली you do सुनने it पड़ते हैं जैसे consistently. कि एक नियम है, परंतु अगर Sometimes आप उस मुरली souls, पर they listen to the ध्यान Murli मंथन करो, just फिर like that उसकी as a सत्यता है, routine. उसकी और But गहराई में जाओ, but उसको you, जीवन after में धारण listening, करो, तो उमंग also think उत्साह about बनेगी, it, churn the शक्ति points. बनेगी। Then then ऐसे नहीं कि then बस मुरली you सुन will ली accumulate the power. तो It's उमंग not like you उत्साह just बढ़ेगा, नहीं। listen to the Murli, you have listened तो to the Murli and शक्ति the को enthusiasm will समझो, increase. No, शक्ति you को have to churn सीखो। the knowledge. So उमंग accumulate the उत्साह भी powers. एक बहुत बड़ी शक्ति है, So the zeal and enthusiasm is also a great power. जिसको हम कहते हैं ना करने की, जैसे अंदर में जिज्ञासा हो, मोटिवेशन So हो। there should be motivation inside to do कोई कोई something. होते हैं जिनको There are बाबा को few संदेश किसको souls देना है, who have this desire बस ये उनकी give लगन होती है। मैंने एक to भाई give को देखा, देखा Baba's introduction to everyone. कहीं भी वो होंगे ना, They have lot of zeal and enthusiasm to give बाबा का Baba's परिचय, introduction. अपनी So जेब से कार्ड निकाला, उसमें I ब्लेसिंग noticed one लिखी brother, होती है, he had a lot of zeal and और वो enthusiasm to जरूर give Baba's देंगे। introduction. So कोई taking out ट्रेन card, की वहां पर कोई टाइम card होता and था, giving blessing to ट्रैफिक others. लाइट के ऊपर पुलिस खड़ी होती थी, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं थे, उसको भी So, so even और when देशों we are में भी stuck in मैंने कई बार traffic, देखा, traffic police क्योंकि उनको ये is होता है कि standing, then we सभी can सुधर give जाए। give card to तो ये that शक्ति हुई ना उमंग traffic उत्साह police की, also. कि आप कुछ भी कर पाते हैं और करते ही रहते हैं। So there is power in zeal and enthusiasm. जैसे कोई होते हैं उनके मन में यही होता है, उन्होंने सुना होता है कि अगर आप शरीर से काम नहीं लेते बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं, राइट। So if और कई someone's body is करते not रहते हैं, जरूर cooperating, कुछ ना कुछ, then चाहे मन से, बुद्धि से, then शरीर से, they sit instead of standing. तो वो शक्ति यूज भी हो रही है, बढ़ भी रही है, So जमा we भी have to हो रही है। keep using the तो यही जो powers, बाबा शक्ति की just like बात we कर keep रहे हैं, using the बड़ी body. सूक्ष्म है, So it's very वो subtle, पवित्रता the है, वो शक्ति है। power. लेकिन थोड़ा Power, भी अगर वो purity is also अपवित्र power. आने लगता है, थोड़ा भी अगर अपवित्र संकल्प आने If लगता है, there are impure thoughts in the तो mind, शक्ति कम हो जाती है ना, then मिलावट हो जाती the है। power तो reduces ये अटेंशन तो निश्चय because रखना पड़ेगा।
gets contaminated. संकल्प श्रेष्ठ रहे So अच्छे our रहें thoughts should be very elevated. शक्ति संकल्पों के द्वारा जमा भी होती है और संकल्पों से Powers, they get accumulated टाइम पर अच्छे through our संकल्प आ जाए thoughts. राइट So संकल्प आ right जाए thoughts should come at the right time. उमंग उत्साह के संकल्प आ जाए Thoughts of zeal and तो enthusiasm शक्ति should be आती है there in the mind, तो and इसलिए then the power will come. बहुत अच्छा है So this is good. संकल्प की शक्ति जमा करो So we should और accumulate निर्भयता का तो बहुत the power जरूरी of है thoughts. सुनते सुनते समाचार एक सूक्ष्म में भय मनुष्य के मन में बैठ जाता है So when people listen to the news, there is और this subtle मन में fear जो भय that होता है ना gets in there, थोड़ी सी कोई बात होगी तो ले गई तो बहुत बड़ी बात है even if there is the निर्भय है तो बड़ी बात it's भी आती है it's a small कहते thing, कोई बात but it नहीं है मैं तो सामना कर becomes सकता big when there is fear. But when there is fearlessness, that तो then even a big thing चलते becomes रहिए small. उड़ती कला में ही So रहना है keep हमें journeying सदा ही the ocean of knowledge. शक्ति जमा You करें have to be in the flying stage. उमंग उत्साह एक बड़ी शक्ति है Zeal and enthusiasm is a सब देखो great कि power. उमंग उत्साह कम So होता है कभी कभी check whether होता ही your है enthusiasm gets तो reduced. फिर से अपने भाग्य को सोचकर So then at that समय बड़ा time, think मूल्य about your fortune. Time is so कला सुनने precious. समय मिलता है बाबा का मैं साथी हूँ हाँ, I am ये Baba's ये ऐसे companion. संकल्प लाकर So अपने create उमंग उत्साह की thoughts. शक्ति को This way you increase the ओ, power of zeal and enthusiasm. Om Shanti. उमंग उत्साह बड़े से बड़ी शक्ति। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन Zeal and नहीं, enthusiasm is the greatest power. The zeal and enthusiasm is the greatest power for all of you Brahmin souls. It is not a dry, tasteless life. People of the world say, what can we do? There is no sweetness. It is completely dry. And what would you say? That you constantly have the sweetness of zeal and enthusiasm. You can never become disheartened. You are constantly happy in your heart. Om Shanti.